Students, chapter is magnetic effect of current and the topic is force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. जब किसी भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो ये कितना फोर्स लगता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ये सभी कुछ इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने सपोज किया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर of length L and this area of cross section is a capital A, length इसकी हमने suppose की L and the current flowing in it is I and the direction of electron, the motion of the electron is opposite to the direction of current. Here electron and this electron moves with velocity Vd. This electron moves with velocity Vd opposite to the direction of current. Now suppose a uniform magnetic field is here. Suppose this is y-axis and this is suppose z-axis and this is suppose here x-axis. Now suppose the magnetic field, uniform magnetic field is here. Now the small current element, this is a small current element IL vector along the direction of current. Now as you know, when the charged particle moves in uniform magnetic field, it experiences a force. Similarly for electron, the force experienced by electron is given by minus E into this velocity cross magnetic field. So this is the force experienced by this electron in this magnetic field. Now let N be the number of electron per unit volume हमने सपोज किया इसके यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. Then total number of electrons, therefore total number of electrons is equal to this n into A into L. This is number of electron per unit volume and this is the total volume, area of cross section into length. So this is total number of electron and hence एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स. Hence total force on the conductor is equal to capital F. यहाँ पर ये capital F लिख रहे हैं, this is small f and this is n into small f. n क्या है, total number of electrons. Therefore this is minus into n into A into L into E, this is into Vd cross this magnetic field. Right? This is the total force on the conductor. जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे उन सभी पर इतना फोर्स. तो this force is on the conductor. Now this is equation number 1. Right? We know that I is equal to M E A V D. Relation between current and this velocity. हमने current electricity में हमने ये किया था. I is equal to M E V D. Now this multiply by L. So this is N into E into A into V D into L. Now this is vector and this here also vector and the direction of both opposite. ये Vd की डायरेक्शन, ये IL की डायरेक्शन, therefore here minus sign. So this is equation number 2. Then from equation 1 and 2, this total force is equal to this is equal to IL NEAL VD is equal to IL. Therefore this is IL vector cross B vector. So this is the required force on the current carrying conductor in uniform magnetic field.
Now this can be written as F is equal to this ILB sin theta, ILB sin theta, ठीक है. Now special case number one, when theta is equal to 0 or 180 degree, then F is equal to force is sin 0 is 0, therefore force is 0, sin 180 is also 0, ठीक है. Now number 2, when theta is equal to 90 degree, then sin 90 is 1, then force F is equal to, this is IL into B, this is maximum force on the conductor, Now the direction of this force, is perpendicular to the plane containing this IL vector and this B vector. The direction of force is perpendicular to this vector and this vector, or the direction can also find out by using इसकी डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग दिस लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से भी करंट दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग दिस लेफ्ट हैंड, if the direction of, according to this Fleming left hand, if we stretch this forefinger, this center finger and this thumb mutually perpendicular to each other, and if the direction of forefinger represent the direction of magnetic field, and this center finger represent the direction of current, then the direction of this extended thumb will represent the direction of force, right? And here the direction of current is along y-axis and the magnetic field is along z-axis. Therefore, force is perpendicular to both, that is along x-axis. फोर्स की डायरेक्शन हमारी यहाँ पर होगी, राइट. या तो हम इससे निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, या बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट. तो इस तरह से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. ये जो हमारे यहाँ पर आईएल वेक्टर है, दिस आईएल वेक्टर, इस एक्सप्रेशन के अंदर आईएल वेक्टर बिहेव्स एज डिस्प्लेसमेंट, राइट. याद रखें. न्यूमेरिकल करते हैं, इसी पर बेस देखिए. नंबर 1 न्यूमेरिकल इज ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I along x-axis. A magnetic field B vector is equal to B naught into I cap plus J cap plus K cap Tesla exists in the space. Then find the magnitude of the force on the wire. We know that this force is equal to this IL vector cross magnetic field vector. हमने डेरिवेशन किया था, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, right. Now current is flowing along x-axis, therefore this IL vector is IL I cap, because current is flowing along x-axis. That's why here I cap cross this magnetic field. This is B naught into I cap plus J cap plus K cap. अब इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो दिस इज F वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज B naught into I into L. Now this I cross I is 0. Now I cross J is plus K, and I cross K is minus J, right. Therefore magnitude of this force is equal to square root of coefficient of K. This coefficient of K is B naught IL square, and the coefficient of J is also same
तो this is equal to B naught IL root of 2. So this is the magnitude of the force on the current carrying wire in magnetic field B is equal to this. तो इस तरह से ही हम जानते हैं फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B, देयरफॉर F इज इक्वल टू करंट की डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस में थी, दैट्स व्हाई हियर I कैप एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एंड नाउ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट। Now question number numerical number 2 given B vector is equal to 0.3 टेस्ला। हमें एक वायर दिया है, ये इस वायर को इस तरह से बेंड किया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा B is equal to 0.3 टेस्ला and this magnetic field is parallel to AB and DE, parallel to AB and DE. Here this 1 ampere current flows through the wire, right, and the angle at point C is 60 degree. Then find the force on each segment. हमें सभी पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, इस पर कैलकुलेट करना है, इस पर करना है और इस पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। फोर्स ऑन दिस आर्म AB और आर्म सेगमेंट कौन सा, दिस DE, AB सेगमेंट और DE सेगमेंट दोनों पर फोर्स देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज F is equal to BIL sin theta। फोर्स हमने डेरिवेशन किया था, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा इतना फोर्स लगता है, बट हियर थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू लेंथ, देयरफॉर थीटा इज 0। Therefore, FAB is equal to FDE is equal to 0. Now, force on side BC segment पर force चाहिए, तो this is BIL sin 90. Here angle is 90 degree with the direction of magnetic field, and this sin 90 is 1 होता है, तो this FBC is equal to B is equal to 0.3, current is 1 ampere and the length of BC, this length of BC is 0.08 meter, 0.08 meter, because here this centimeter, तो मीटर में कन्वर्ट किया, तो this is 0.08 meter. Now this is FBC is equal to 8 3 24, so this is 24, 1 2 and 3 decimal, so this is 0.0, this is 0.024 न्यूटन। तो इस पर हमारा इतना फोर्स लगता है BC पर। नाउ फोर्स ऑन दिस साइड CD सेगमेंट पर फोर्स चाहिए हमें, CD पर फोर्स चाहिए, फॉर्मूला तो सेम है आपका BIL sin theta। तो दिस फोर्स CD इज इक्वल टू B की वैल्यू 0.3, करंट इज 1 हियर आल्सो, and length is 0.1. This is 10 centimeter and length is 0.1. And now the angle is देखिए, this angle is 60 degree. Here this is 90. Therefore this is 30 degree, and this also 30 degree here, right? And the angle between this IL vector, here it is IL vector and this magnetic field. IL vector आपका यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में और यहाँ पर आपका B वेक्टर, तो ये एंगल आपको लेना है sin 30 and this sin 30 is 0.5, तो this is CD, force on CD is equal to 0.3 into this 0.1 into 0.5, right? So this is equal to 5 3 15 and decimal point 1 2 and 3, तो डेसिमल पॉइंट आपके इतने, तो दिस इज फोर्स ऑन CD। तो इस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। AB और DE पर फोर्स हमारा 0 आया क्योंकि एंगल थीटा 0 था। ना BC पर हमारा BIL sin 90 हो गया, वैल्यू रखी हमने sin 91, तो दिस इज 0.024। अब हम कहां पर देख रहे हैं, CD पर BIL sin थीटा, एंगल कितना है, एंगल ये लेंगे IL वेक्टर क्रॉस दिस, तो एंगल यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री, दिस इज 0.5, तो आंसर इज दिस। तो इस तरह से कर सकते हैं
Now numerical number 3, a straight wire of length L carrying current I stays suspended horizontally in mid-air in a region where there is a uniform magnetic field P and the linear mass density of the wire is lambda. Linear mass density का मतलब mass per unit length of the wire. This is mass per unit length of the wire. Then obtain the magnitude and the direction of this magnetic field. एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक स्ट्रेट वायर, सपोज दिस स्ट्रेट वायर एंड सपोज करंट आई फ्लोइंग इन इट, राइट. इस तरह से करंट आई फ्लो करती है इसमें. द weight of the wire is vertically downward and this is suppose mg. now इस weight को बैलेंस करने के लिए there should be a force on the wire due to magnetic field and this is BIL sin theta. BIL sin theta, right. now here theta is 90 degree. Theta is 90 degree. Because the direction of magnetic field is perpendicular to the length, because the force must be vertical upward. इसलिए डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ ऑफ द कंडक्टर के. तो दिस इज BIL sin 90 is equal to mg. sin 90 is equal to mg. therefore हमें चाहिए b, तो this is mg upon this is IL, right. this is IL, but this m upon L is known as linear density, mass per unit length. therefore this is lambda g upon I. lambda g upon I. तो this is the magnitude of the magnetic field. ठीक है. now the direction is क्या होगी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगी? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ दिस वायर and horizontally, right. डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर, ये वायर है यदि हमारा, तो इसकी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल होगी. देन ओनली फोर्स on the wire due to magnetic field vertically upward, and this force will balance weight of the wire. therefore this both are equal, b is equal to and this is lambda g upon I. ठीक है. तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट किए. तो इस तरह से कर सकते हैं. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.